ब्लैक होल एपिसोड होची मेन कॉज ऑफ बैटल प्लासी व्हेन एंड बिटवीन whom the battle of Plassey was fought 1757 AD English and Sirajuddaula between battle of Plassey was fought who led the English forces in the battle of Plassey Robert Clive who led the English forces in the battle of Plassey Robert Clive इंग्लिश फोर्सेस को लड़ किए थे हुआ तो चीफ ऑफ आर्मी सिराजुद्दौला मिर्जापुर चीफ ऑफ आर्मी वो बिकेम द रूलर ऑफ बंगाल बंगाल का रूलर था मिर्जापुर 1757 AD एंड ऑफ बैटल प्लस इंग्लिश रिप्लेस द मिर्जापुर 1760 में मीर कासिम द सन इन लॉ ऑफ मिर्जापुर टू होम व्हिच प्लेस मीर कासिम ट्रांसफर टू हिज कैपिटल मुर्शिदाबाद टू मंगीर who established the gun factory at Mangar. Mir Qasim established gun factory. 1763 AD who was made the ruler of Bengal in place of Mir Qasim Mirzafar. Mir Qasim the Mirzafar who was made the ruler of Bengal in place of Mir Qasim Mirzafar. फिर से हुआ 1763 between whom battle of Buxar fought. Mir Qasim's Nawab Awadh Sirajuddaula Mughal Emperor Shah Alam fought with British. Nawab Awadh Sirajuddaula and Mughal Emperor Shah Alam was fought on Mir Qasim. The first Carnatic War 1740-48 when Danes forced to sell their settlements to British in 1854. 1854 Danes forces. When and by whom the French East India Company was formed. French East India Company 1664 by Colbert. When and by whom? In which region? Then the French East India Company was formed. Louis XIV 14. French East India Company was formed. When first French factory was established 1668. The first French factory was established. Franco is carbon. Caron. Franco is Caron. First East India Company was formed. Louis 14. French factory 1668. Then forced for the settlement of the British. 1854 में सेल्स फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी was formed. देश को बचाने के लिए चुनाव लड़ो अदरवाइज ऑल सारी नौकरी बेचा जाएगा. Which governors was received the French power in India. अभी बदमाश अभी नौकरी में भर्ती हो गए. उड़ीसा उत्तर प्रदेश राजस्थान ऑल जॉब आर सेलिंग. OMR ऑप्टिकल कैटरी OMR ऑलरेडी स्कैम. सो 2029 में हर राज्य में किसान स्टूडेंट्स फार्मर्स शुड कॉन्टेस्ट इलेक्शन लड़ो इंडिपेंडेंट एंड विन पूरा इट शुड बी वायरल इन इंडिया. फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री फ्रैंको कैरन. सिर्फ पढ़ने से फायदा नहीं. Which governor was received the French power in India. फ्रेंच पावर को लियोनेर एंड डुमास रिसीव द फ्रेंच पावर्स. सॉरी IAS अफसर में आधा घोटाला. UPSC सिविल सर्विस उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस बिहार सिविल सर्विस उड़ीसा सिविल सर्विस हर में घोटाला. एग्जाम पूरा 100% सेलिंग. कल राजस्थान सर्विस में घोटाला. सो देश को बचाओ इलेक्शन लड़ो. 7 लाख गाँव में 7 लाख गाँव नो पीपल कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन. कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा है. इलेक्शंस सरपंच भी पॉलिटिकल पार्टी हमें नहीं चाहिए. इंडिपेंडेंट शुड बी विन. 20 crore students in India and 7 lakhs villages. Minimum 40 crores
farmers, but no representative. पूरा 750 MP से हमारा किसान स्टूडेंट्स लेबरर होना चाहिए. Who founded the Hyderabad? निजामुल मुल्क असफ जहाँ 1724 हैदराबाद को फाउंड किए थे. What was the original name? निजामुल मुल्क एंड असफ जहाँ. तीन कुल्च खां. निजामुल मुल्क. देश को बचाने के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ेगा आम आदमी को. कॉमन मैन स्टूडेंट्स JNU दिल्ली कर्नाटक उत्कल यूनिवर्सिटी. फ्रेंच फैक्ट्री वॉज एस्टेब्लिश 1660. फैक्ट्री फ्रेंच फैक्ट्री नहीं तो विदेश जैसे हमको शासन चला रहे थे अभी भी वही पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल बाय द बिजनेसमैन. देश का 200 लाख करोड़ हमारा देश का 300 लाख करोड़ पूरा भारत में है कर्जा जो हम चुका नहीं पाएंगे. नेवर पे द लोन. व्हाट आर द टाइटल्स गॉट तीन किल्च खां फ्रॉम फारूक सियार. खान ई दुरान एंड निजामुल मुल्क. टाइटल्स गॉट द चीन कुल्ची खां. Who was the Diwan of Chin Kulchi Khan? Puran Chand. Who assumed the title of Nawab of Carnatic? Nizam. Who asserted the independence of Bengal during the reign of Mughal? Murshid Quli Khan. Independence of Bengal के लिए. देश को बचाओ. Free train, free plane. When did Murshid Quli Khan die? 1727. एक MLA 5 बार 7 बार MP तनख्वाह ले रहे हैं और ये तनख्वाह पेंशन्स और इधर लोग टैक्स देते के मर रहे हैं. When did मुर्शिद कुली खान died? 1727. Who became the ruler of Bengal 1756? सिराजुद्दौला. After the death of Ali Bardi Khan. Who asserted the independence of Bengal during the reign of Mughal? Murshid Quli Khan. Independence of Bengal during the reign of Mughals. Murshid Quli Khan. Who assumed the title of Nawab Carnatic? Nizam. Chin Kulchi Khan. Puran Chand. What is the original name of Nizamul Mulk? Asaf Jahan. Asaf Jahan. French factory established Franco Caron. First French factory established by Franco Caron. Second French factory was established Mausoleepatnam in 1669. Second French factory 1669. French East India Company was established 1664 by Colbert. French East India Company formed Louis XIV. Louis XIV. Who Danes first sell their settlement 1854. देश को आम आदमी बचा सकता है. कॉमन मैन. एट व्हिच प्लेसेस 7 लाख गांव इंडिया में है मगर एक भी MP नहीं है गांव का. एट व्हिच प्लेसेस डिड जहांगीर ग्रांटेड परमिशन टू विलियम हॉकिंस टू एस्टैब्लिश ए फैक्ट्री? सूरत. जहांगीर ग्रांटेड परमिशन टू विलियम हॉकिंस टू एस्टैब्लिश ए फैक्ट्री. सूरत में. विलियम हॉकिंस का फर्स्ट थॉमस रो नहीं विलियम हॉकिंस फर्स्ट आए थे. अब व्हिच मुगल रूलर. आगे भी ईस्ट इंडिया कंपनी था अभी भी कंपनियां देश को चला रहे हैं. अब व्हिच मुगल रूलर्स. देश को बचाने के लिए स्टूडेंट किसान को चुनाव लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा. अब व्हिच मुगल रूलर्स को डिड सर थॉमस रो विजिट. जहांगीर आए थे पहले हॉकिंस उसके बाद थॉमस रो. एट व्हिच प्लेसेस सर थॉमस रो सक्सीड in getting the permission for the established factories? Surat, Agra, Ahmedabad and Bhuj. Succeed in getting the permission for established factories establish के लिए. At which places? Succeed in getting the permissions. Where are the first British East India Company was built? Surat 1608. 1608 में ब्रिटिश सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेडक्वार्टर was replaced from Surat to Bombay. 1687. 1608 में first British East India Company was built. Headquarter was replaced from Surat to Bombay. 1687. Raja Chandragiri have permission to build a fortified which was named Fort St. George. Raja Chandragiri gave permission.
1690 जब चार्नक एस्टैब्लिश ए फैक्ट्री ऑफ सुल्तानाटी एंड जमींदारी ऑफ 3 विलेजेस। 1690 जब चार्नक एस्टैब्लिश ए फैक्ट्री सुल्तानाटी एंड जमींदारी सुल्तानाटी कालीकटी एंड गोविंदपुर जमींदारी ऑफ 3 विलेज सुल्तानाटी कालीकट एंड गोविंदपुर। एक्चुअली मतलब एक्चुअली देश को बचाओ। At which place did the Jahangir granted permission to William Hopkins? Raja Chandragiri was gave permission to build 45, which was named Fort St. George. British Indian Company headquarters सूरत टू बम्बे 1687 में सूरत से बम्बे। देश को बचाने के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ेगा गरीब किसान स्टूडेंट्स को। प्रोटेस्ट करने से, सरकार का विरोध करने से, पिटाई खाने से, लाठियाँ खाने से, कैन गैस खाने से कोई फायदा नहीं। 543 MP MLA किसान स्टूडेंट्स नौजवान जवान होना चाहिए। पूरा वीडियो भारत में शेयर करो कि हर भारत में 4300 है, 4300 MLA है, उसमें से किसान नौजवान स्टूडेंट्स नहीं है, वो होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी चंदा लेके देश को बेच रहे हैं। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में देश मत छोड़ो। इतना पैसा स्विट्जरलैंड में है, स्विस बैंक में, जो आ जाएगा मॉरिशस में, तो इंडिया का कर्जा चुका सकते हैं हम लोग। कैसे चुकाएंगे? आम आदमी, स्टूडेंट्स, किसान, इन सब चुनाव लड़ेंगे, सत्ता में आएंगे। So, who obtained royal firman from Mughal Emperor Farrukhsiyar? John Sherman. Royal firman Mughal Emperor Farrukhsiyar से John Sherman. What the other name of firman in British rule in India? It gave large concession to the company. Magna Carta. Magna Carta means other name of this firman. Firman means charter. Gave larger concession to the company. Magna Carta. When Danes arrived in India 1616, Danes देश को बचाने के लिए चुनाव इलेक्शंस में कॉमन मैन स्टूडेंट्स जीतना पड़ा। नहीं तो देश को पूरा पहाड़ जंगल सारी को बेच देंगे इन लोग पैसे के लिए, पॉलिटिकल पार्टी। वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ डेन्स? श्रीरामपुर। वेयर द डेन्स एस्टैब्लिश द सेटलमेंट इन इंडिया? ट्रैंकूबर तमिलनाडु 1620, श्रीरामपुर बंगाल 1676। The Danes established the settlement in India. Tranquebar, Tamil Nadu in 1620. Serampur, Bengal. When the Danes arrived in India, Danes 1616 में। देश को बचाने के लिए पढ़ने से फायदा नहीं है, ज़्यादा नौकरी नहीं मिलता है। 1609 who introduced the policy of imperialism? कलकत्ता, विलेज सुल्तानाटी कालीकट गोविंदपुर वेयर? सुल्तानाटी कालीकट गोविंदपुर, ये सब कलकत्ता में। ग्रेट सिटी रॉयल फॉरमैन जॉन शर्मन फर्रुखसियर, मुगल एम्परर फर्रुखसियर से जॉन शर्मन मिला था। दिस फॉरमैन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मैग्ना कार्टा, ही गेव लार्ज कंसेशन टू द कंपनी। मैग्ना कार्टा
एक्चुअली